अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टीचर्स ऑन माय प्रोफाइल। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट गिफ्ट कार्ड। आज हम बात करेंगे फ्लैश कार्ड्स। इट्स अ वेरी पॉपुलर ऑप्शन एंड इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे आप अपने स्टूडेंट के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं अपने लेसन्स में एंगेजिंग करने के लिए। सबसे पहले तो सर्च करते हैं कि व्हाट इज़ गिफ्ट कार्ड, सॉरी फ्लैश कार्ड। सो व्हाट इज़ फ्लैश कार्ड? A flashcard is a card bearing information on both sides, which is intended to be used as an aid in memorization. Each flashcard bears a question on one side and an answer on the other. मतलब ये कि फ्लैश कार्ड टू साइडेड कार्ड है जिसके एक तरफ क्वेश्चन हो सकता है और दूसरी तरफ आंसर, या एक तरफ कोई एक स्पेशल वर्ड हो सकता है और दूसरी तरफ कोई दूसरा मीनिंग। लेट्स से मैं डेज ऑफ वीक मैं सीख रहा हूँ, यानी कि हफ्ते के जो दिन है, पूरे वीक के जो दिन है वो मैं याद कर रहा हूँ। छोटी क्लासरूम में हूँ मैं अभी। लेट्स से मुझे नहीं पता मंडे को उर्दू में क्या कहते हैं, सो मैं क्या कर सकता हूँ एज अ मेरा टीचर मुझे वो फ्लैश कार्ड के तौर पे शो कर सकता है कि ऑन वन साइड इट इज रिटन एज अ मंडे। सो उसका मतलब क्या होगा? पीर, ट्यूसडे, मंगल, वेंसडे, गुड। सो इस तरीके से एक साइड पे एक इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरी साइड पे दूसरी। सो कोई न्यू लैंग्वेज लर्न करने के लिए इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, सो मैं तभी इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं कोई दूसरी लैंग्वेज लर्न कर रहा हूँ, जैसे लेट्स से अरबिक, सो डिफरेंट वर्ड्स के और उसके अदर लैंग्वेज में या आपकी लैंग्वेज में मीनिंग है वो भी एक दूसरी साइड पे लिख के उसको किया जा सकता है। सो लेट्स क्रिएट। अभी मेरे पास कोई फ्लैश कार्ड नहीं, लेट्स से मैं क्रिएट करता हूँ। Monday, language title, it is actually English, so I'll choose it is in English. Definition, it's actually peer. So so you could write it in Urdu. It is not supported yet, but soon इसमें मामा ट्यूटर की तरफ से जो अपडेट है कि वो इसमें उर्दू लैंग्वेज को भी ऐड कर देंगे। Yes, Urdu. In Urdu we call it peer. Excuse me. Okay, so pronunciation इसकी क्या होगी? Peer. We just and that's it. If you want to add any note for that, आप उसकी explanation भी ऐड कर सकते हैं। इंग्लिश में पीर है, उर्दू में भी पीर, सॉरी इंग्लिश में मंडे है, उर्दू में पीर है। Another Tuesday in English, okay, and Mangal in Urdu. We call it Mangal. In Wednesday in English, and Bud in Urdu. इसके फर्दर आप नोट्स में भी डाल सकते हैं चीज़ें टू हेल्प द लर्नर। Thursday, language is English. Definition Jumerat. जुमेरात, या आप इसको सॉरी इसको आप अगर उसमें डाल दें प्रोनाउंसिएशन में, एंड इसको आप लिख दें जुमेरात अबाउट दैट, एंड इसको आप उर्दू सॉरी एंड देन लास्ट इज सॉरी लास्ट नहीं अभी कहते हैं जुमेरात जुम्मा, सो फ्राइडे इंग्लिश, फ्राइडे जुम्मे सॉरी जुम्मा इन उर्दू जुम्मा। Then I'll add another one, Saturday in English. Sorry.
हफ्ता हफ्ता got it. Okay, the last one is actually uh, Saturday or Saturday in English. Then sorry, Atwar. Atwar. ओके सो मैंने पूरे वीक जो डेज हैं उन सबको मैंने यहाँ पे ऐड किया है और मैं इन फ्लैश कार्ड्स को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर आपको फिर भी समझ ना आए ये कैसे है तो आप गूगल करके इसके बारे में फर्दर रिसर्च भी कर सकते हैं। सो अब मैंने ऐड नहीं करना है, मैंने व्यू करना है। सो मैं क्या करूँगा, अपने स्टूडेंट्स को जो है वो अपने ये फ्लैश कार्ड्स असाइन करूँगा एंड से ओके क्लिक ऑन वर्ड्स टू फ्लिप इट। ओके सो वर्ड सैटरडे, सो आप इसको उर्दू में क्या बोलेंगे, यू विल आस्क योर स्टूडेंट एंड ही विल से हफ्ता। सो okay, so definition atwar, is it correct or wrong? Obviously, hafte Saturday atwar ko to nahi kehte na, so it is wrong. So you student has to answer. Okay, हफ्ता correct. Friday को क्या कहते हैं जी? Friday को क्या कहते हैं? जुम्मा, yes it is correct. Thursday को क्या कहते हैं? Thursday को कहते हैं जुमेरात, yes it is also correct. Wednesday को क्या कहते हैं? बुध, yes it is also correct. Tuesday को क्या कहते हैं? मंगल, yes it is correct. Monday को पीर कहते हैं, yes it is also correct. Okay, so there is no more questions, so I can so मैंने जो है वो आंसर टीचर आपके स्टूडेंट ने आंसर किया है एंड आपने उसको जो है ओके किया है, दैट्स फाइन। सो 7 के 7 उसने कार्ड्स के थ्रू जो है वो न्यू वर्ड्स सीख लिए हैं। सो वेल डन गाइस।